Hello students, yesterday we studied the process of electrolysis, and one of the applications of the process of electrolysis is electroplating. You must recall when you got your first bicycle, तो उसके जो हैंडल बार्स थे वो बहुत शाइनिंग थे, जो उसकी व्हील रिम्स थी they were shining. लेकिन अगर एक्सीडेंटली आपसे साइकिल गिर गया और उसके ऊपर थोड़ी सी भी स्क्रैच आ गई तो उसके अंदर का जो मेटल सरफेस था जो कि बहुत ज्यादा शाइनी नहीं था एज द आउटसाइड वन, दैट वाज एक्सपोज्ड. Similarly, all of us have seen watches at home. Chains जो होती हैं, they are bright, very shiny gold, looks like gold only. लेकिन काफी यूसेज के बाद उनका जो नॉट सो शाइनिंग पार्ट है that starts exposing. Similarly, you might have seen certain kind of artificial jewelry at home which looks like like gold only, but it is not actually gold. And with usage, with time, इसकी शाइन जो है वो डल हो जाती है, जो कि नॉर्मल गोल्ड आर्टिकल्स में नहीं होती है. या फिर अगर आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे, यू हैव सीन जो न्यू टैप हमारे घर में होता है वो बहुत शाइन करता है, लेकिन यूसेज के बाद में उसकी जो डलनेस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, शाइन कम हो जाती है. हैंडल बार्स देखे होंगे आपने. तो ऐसे सारे प्रोसेसेस में व्हाट इज द प्रोसेस बीइंग यूज्ड इज कोटिंग ऑफ मेटल ओवर अनदर मेटल. तो ये प्रोसेस हाउ इट इज डन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस through an activity first. Electroplating, the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Let us now see with the help of an activity how electroplating is exactly done. Take two copper plates of size 10 cm by 4 cm. Clean them with sandpaper. Now wash them with water and then dry them up. Make a solution of 250 milliliter of distilled water and 2 teaspoons of copper sulfate in a clean and dry beaker. For making the solution more conductive, add 2 to 4 drops of dilute sulfuric acid to it. Immerse the copper plates in the solution and connect with the battery. Allow the current to pass through this setup for 20 to 30 minutes. Now remove the battery and carefully observe both the plates. What do you observe? You observe that the copper plate which was connected to negative terminal got a coating of the copper in it. But it was not with the other copper plate. How did this happen? Actually, as current passes through the copper sulfate solution, it dissociates the copper sulfate into copper and sulfate. This free copper, being positive in nature, is attracted by the copper plate connected to negative terminal of the battery and deposits over there. But will this process banish the copper from the copper sulfate and thus the process will cease? No. The process continues as the copper plate connected to the positive terminal of the battery releases its copper, which gets dissolved in the copper sulfate solution and hence replenishes it. So we have seen how electroplating can be done to transfer one metal over another. So you have seen that what happens when we're using two copper plate, one is connected to the negative terminal and one is connected to the positive terminal. जब हमने electricity pass की, then what happens is copper sulfate solution जो था, that breaks up into copper ions and sulfate ions. These are positive and negatively charged particles. Copper जो ions होते हैं, they are positively charged particles, और sulfate ions जो होते हैं negatively charged particles होते हैं. जब electric current is being passed, क्योंकि जो copper plate was connected to the negative terminal, वो negative है nature में, तो जो copper ions release हुए हैं, they get attracted towards the positive negative end. copper ions positively charged हैं और वो नेगेटिव एंड यानी कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वहां जाके डिपॉजिट हो जाते हैं एज कॉपर मेटल.
अब ये प्रोसेस कंटिन्यू होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रोलाइट में से कॉपर जो आयंस हैं वो कम होते जाएंगे, सो द प्रोसेस शुड कम टू अ स्टॉप वंस ऑल द कॉपर आयंस आर फिनिश्ड. बट दिस डज नॉट हैपन. क्यों नहीं होता है? क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ जितने कॉपर आयंस फ्रॉम द सोल्यूशन आर मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड एंड गेटिंग डिपॉजिटेड, उतने इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर from the copper plate which is acting as an anode is moving, is getting removed from the copper plate and moving as ions into the solution. तो ये process continue रहता है. Solution में से copper ions are moving towards cathode and getting deposited there because they are oppositely charged. Copper ions are positively charged and cathode is negatively charged. और equal amount of जितने copper ions are moving towards the cathode, उतने equal amount of copper ions are being released from the copper plate into the solution. and ये process continue होता रहता है क्योंकि copper ions जो हैं वो replenish होते रहते हैं. and इस process को हम electroplating कहते हैं. इस process से copper is deposited, इस case में copper is being deposited from one electrode to the other. now you must be wondering कि सिर्फ copper ही ऐसा कर सकता है? नहीं. whatever metal we are using as anode can be deposited on the metal which is acting as cathode. Let us see this through another activity, but before that let us recall what is electroplating and what are the necessary conditions for electroplating. So the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is termed as electroplating. अब conditions क्या electroplating की? पहली बात, electroplating जो है, it is a very useful process और ये industry में बहुत ज़्यादा use होता है, widely use होता है for coating metal objects with a thin layer of different metal. ठीक है? अब conditions क्या हैं? पहला, जो ऑब्जेक्ट हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है दैट इज ऑलवेज मेड कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी. जो ऑब्जेक्ट जिस मेटल से हमने कोट करना है दैट इज मेड ऑफ एनोड और द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. और इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज कर रहे हैं इट इज ऑलवेज द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मेटल दैट इज टू बी कोटेड. जैसे हमने कॉपर को डिपॉजिट करना था तो वी यूज्ड कॉपर सल्फेट, salt solution of copper sulfate. Similarly, we can do it for other metals also. Let us see how. Now, for example, if we have to coat this iron object with copper, then we will connect the iron object to the negative terminal of the battery and copper plate to the positive terminal of the battery, and we are using a solution of copper sulfate again क्योंकि हमें copper की coating चाहिए iron के ऊपर. So when we pass electric current, then again copper sulfate will break up into ions. Copper ions क्योंकि positively charged होते हैं, they will move towards the iron which is negatively charged and get deposited there. And equal amount of जितने copper ion solution से iron स्पून के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर इज गेटिंग dissolved from the copper plate which is anode into the solution, and hence after say a time of 20 to 30 minutes the iron object gets a coating of a reddish brown coating that is of copper. Now suppose we have to coat an iron object with silver. सिल्वर मेटल की कोटिंग अगर हमने करनी है, सिल्वर कोटेड आर्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, हम लोग यूज करते हैं. तो वो कैसे करते हैं? दे विल टेक एन आयरन आर्टिकल, जो भी आयरन का आर्टिकल है उसको हमने कनेक्ट कर देना है टू द नेगेटिव एंड ऑफ द बैटरी, एंड जो कॉपर द सिल्वर प्लेट इज यूज्ड एज एनोड, and it is dipped, both these articles are dipped into a solution of silver nitrate solution, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रोलाइट वो लेना है जिसकी की हमने कोटिंग करनी है, जिस मेटल की हमने कोटिंग करनी है उसी की
एक soluble salt लेना है, and in this case it is silver nitrate solution. So when electric current is passed through it, it dissociates into silver ions and nitrate ions. Again, silver ions जो होते हैं वो positively charged होते हैं, so they will move towards the negative end, which is iron, क्योंकि वो oppositely charged हैं, and they will get deposited over there. They will form a layer of silver over there. अब at the same time, equal amount of silver from the anode is getting into the solution as ions. And hence, after a time gap of, let's say, 20 to 30 minutes, the whole of the iron article can be coated with silver. This happens, this process is termed as electroplating. That means we can coat any desired metal over another metal by the process of electroplating, by passing electric current. Now, what are the other uses or applications of electroplating? Gold and silver are two precious metals. सब लोग उसकी ज्वेलरी को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. It's very costly also. It is not very safe to wear it all the time also. So silver and gold plated jewelry is very common to use, which is not very costly also, but it gives the look of silver and gold jewelry only, because जब हम उसकी plating कर देते हैं over a cheaper metal, उसकी appearance भी improve हो जाती है और उसकी value भी increase हो जाती है, right? The second application of electroplating is chrome plating. Now chromium जो होता है, that is a element which is a costly element, ठीक है, but it has a shiny appearance. Chromium की जो होती है एक shiny appearance होती है. It does not corrode, जैसे कि आयरन कर जाता है. corrode नहीं करता है, रस्ट नहीं करता है, वो स्क्रैचेस को भी रेजिस्ट करता है, मतलब उसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं लगते हैं. लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंसिव है तो पूरा ऑब्जेक्ट हम क्रोमियम से नहीं बना सकते हैं. इट विल बी वेरी कॉस्टली. सो ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम अ चीपर मेटल, लेट्स से आयरन, और सिर्फ एक कोटिंग कर दी जाती है क्रोमियम मेटल ओवर इट, ठीक है. और ये बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं, जैसे कि कार पार्ट्स के ऊपर, बाथ टैप्स के ऊपर, किचन गैस बर्नर्स के ऊपर, बाईसाइकिल हैंडल बार्स के ऊपर, व्हील रिम्स के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है. तो व्हाट हैपेंस इज कि हमें एक बहुत अट्रैक्टिव लुकिंग और लॉन्ग लास्टिंग आर्टिकल भी मिल जाता है, एंड इट इज नॉट वेरी कॉस्टली ऑल्सो. सो दैट इज डन बाय क्रोम प्लेटिंग. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस बहुत कॉमन है जो हम लोगों ने सुना हुआ ऑलरेडी, दैट इज प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन, जहां पर कि आयरन को कोट किया जाता है विद अ जिंक, विद अ कोटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम corrosion and formation of rust. तो ये जो आयरन होता है, galvanized iron, ये यूज किया जाता है टू मेक ब्रिजेस, ऑटोमोबाइल्स. इससे स्ट्रेंथ भी मिलती है, एंड इट इज चीपर ऑल्सो, एंड इट डज नॉट corrode or rust also. It is long lasting, ठीक है. Now tinning is another very common application of electroplating. tin cans जो होते हैं ना, जो हम कुछ प्रोसेस्ड फूड को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग से ही बनाए जाते हैं. और इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन, एक मेटल है टिन, उसको आयरन के ऊपर कोट किया जाता है. टिन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है देन आयरन. इट डज नॉट रिएक्ट विद द फूड, डज नॉट रिएक्ट विद फूड, एंड दस डज नॉट अलाउ आयरन ऑल्सो, क्योंकि आयरन के ऊपर कोटिंग हो गई है टिन की, तो वो आयरन को भी अलाउ नहीं करेगा टू कम इन कॉन्टैक्ट विद फूड, एंड इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग spoiled. So these are the different applications of electroplating. Let us see some common things what we have seen at home which are usually electroplated. जैसे कि ये articles हो गए, watches हो गई, jugs हो गए, cups हो गए, आपकी trophies हो गई, bath taps हो गए, handle bars हो गए, handles of car, different आर्टिकल्स जो कि कार में एज एक्सेसरीज यूज किए जाते हैं, कटलरी हो गई, यूटेंसिल्स हो गए, all these are commonly used at home which are usually electroplated. That is all for this chapter.